I'm starting off with the second part of the presentation from where I left. And in the previous part, we had discussed about some of the biological factors. You don't have to remember all of them. I would say definitely remember the genetic influences, the neurochemical, because you can relate that with the treatment part. अब नॉर्मल हॉर्मोन्स वाला लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि ये वाला पोर्शन को आप लोग like the second point को you can always leave that out, and you can then talk about the circadian rhythm, the body clock, and about sunlight. I think that's fairly easy to remember. Now when it comes to the psychological causes, in the psychological causes, please correct here that there would be psychological and not social cause, psychosocial. So in the psychological causes, basically all the any kind of stressful event that acts as as a trigger or as a medium through which the symptoms start coming. That is what we'll be discussing, and it can be basically a heartbreak, even a fight with a long loss, a long childhood friend, and loss of a close friendship. It can be with relation to jobs, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं because of the COVID situation, a lot of people are losing out jobs. A lot of concern is there around health, so any concerns related to health and other factors that you can see are other kind of instance. यहाँ पे मैंने एक term use किया है precipitating factor. Precipitating factor means basically just like जैसे हम लोग साइंस में हम लोग पढ़े हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि इट्स काइंड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होता है ना, तो कंडेंसेशन how certain how water becomes kind of changes form and things like that. So similarly, a precipitating factor, these factors are those factors which kind of trigger or which are highly likely responsible for some of the depressive symptoms to come. ठीक है? So here in your book basically two kinds of life events have been covered. Stressful life events, एक है independent. These life events, as you can see, is basically these are not dependent upon a person's behavior, a person's personality and the way of thinking. It is external to the person, मतलब it's not related to the person. So things like जैसे अभी जो pandemic like situation है, जो cyclone आ रहा है, आया था, है ना, दैट सिचुएशन इस इन चीज़ों की वजह से इफ़ पीपल आर हैविंग सर्टन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन, देन वी वुड कॉल इट टू बी एज इंडिपेंडेंट लाइफ इवेंट्स. एंड डिपेंडेंट लाइफ इवेंट्स वुड बी मोर like things that are related to my personality and my behavior. So for instance, if I am not able to easily I have poor interpersonal relationship with some of my friends, or I am not able to very easily tell the other person that this is where you're wrong, and I'm not able to draw boundaries. All these things which are related to me and probably my faulty way of thinking, faulty patterns of thinking, इनके वजह से जो डिप्रेशन होता है वो डिपेंडेंट लाइफ इवेंट्स हम मानते हैं. एंड इट इज़ बीन सेड दैट डिपेंडेंट लाइफ इवेंट्स एक्चुअली प्ले अ मच मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन द बिगिनिंग ऑनसेट. यहाँ पे मतलब बेसिकली बिगिनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मेजर depressive episode, ये देखा गया एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट. नाउ द साइकोलॉजिकल कॉजेज़. अब आप लोग बुक में काफ़ी सारे फैक्टर्स दिए गए हैं लाइक साइकोडायनामिक एंड एक होपलेसनेस थियोरी दी गई है basically. So all these which is very inspired by Seligman, who was a social psychologist. So all these मैंने इन सब पे फोकस ना करके सिर्फ कॉग्निटिव थ्योरी लिया है और बिहेवियरल थ्योरी पे फोकस किया है. एंड ये बिहेवियरल थ्योरी इज़ बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी. एंड ये अगर आप लोग को याद है, जब हम लोग इनिशियली कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो दिस इज़ व्हाट वी हैड. आई हैड
like very I had given you an overview of. So in the Beck's cognitive theory, अब बेक क्या बोलता है, बेक ये बोलता है कि कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन तभी ऐसे ही रैंडमली नहीं आते, उसका कोई एक कॉज होता है और उससे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम ही सेज दैट द जो जो कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, I'm sorry, let me phrase that. So he said basically जो भी symptoms या जो हम depression देखते हैं, जो भी mood changes देखते हैं in an individual, वो उसका जो cause होता है वो cognitive symptoms होते हैं. And not only is it the cause, लेकिन but these cognitive symptoms they come far much more before than the mood, affective, emotion related symptoms like change in mood and things like that. So Beck had said that कि अब उसका मानना है, अगर आप बुक चेक करेंगे, आई हैव मेंशन्ड द पेजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द end of the presentation, what all things that you should refer to. So he has said कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू इन forming our cognition, our thinking with respect to the world, right? So ये कहीं ना कहीं फ्रॉइड ने भी बोला, but Freud has given a lot of focus on the the sexual aspect and also the repressed aspect. So what Beck says in contrast to Freud, he says that कि ये early experiences जो कि mostly negative होते हैं and a lot of times they will be with relation to मतलब कोई negative experience with our parents, with our caregivers, है ना, उन सब चीज़ों की वजह से we kind of these negative experience then lead to the formation of dysfunctional assumptions. आपके बुक में लिखा गया है depressogenic schemas is basically like your beliefs, okay? So वही ये assumptions फॉर्म करते हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ये डिसफंक्शनल अजम्पशन की वजह से ही हम काफ़ी टाइम डिप्रेशन गो थ्रू करते हैं एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल. एंड देन क्या होता है, अब ये अर्ली एक्सपीरियंस के बीच में और जब लाइफ में कोई इंसिडेंट या स्ट्रेसर होता है उसके बीच में ये सारे अजम्पशंस दे लाई डोमेंट, लाइक दे आर नॉट एक्टिव, दे डोंट रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट लाइफ में अगर कभी कुछ स्ट्रेस हो जाता है, कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाती है, तब क्या होता है, तब एकदम से ये डिसफंक्शनल अजम्पशन दे काइंड ऑफ गेट एक्टिवेटेड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बिकॉज ऑफ दिस डिसफंक्शनल assumption then we have certain negative automatic thoughts or automatic thoughts which then they lead to depressive symptoms. So what are these, like how what is the difference between dysfunctional assumption and automatic thought, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली automatic dysfunctional assumptions are very rigid, are extreme, and and a lot of times we are not aware of, we are usually unaware, please ये कर दीजिएगा, not consciously aware of, there is a correction to be made. And क्या होता है, because of these particular thoughts, beliefs, schemas, we basically, it will be, these things will be very extreme. So for instance, like if I do not if I if I fail, then I am worthless. Okay, so this is like an extreme thought, and this is like an overgeneralized thought, right? Then another example of a dysfunctional belief would be कि I am not loved, or I am not accepted, or things like if I am not if I am not if my thoughts or if my feelings are not accepted by the other person, then I am not loved, right? So these are your dysfunctional thoughts, and then these dysfunctional thoughts or beliefs, they then kind of lead to certain negative automatic thoughts, which is a kind of pattern of thought. So as a result of which
अब ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स में क्या होता है, दे आर नॉर्मली हैव अ वेरी पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ प्रोडिक्शन एंड दे आर नॉर्मली बिलो द सर्फेस, सो यू below the surface of awareness, right? So you would say that one is kind of more or less aware as compared to your dysfunctional thoughts, right? And according to Beck, what he says कि in depression especially is seen that ये जो negative automatic thoughts हैं ये 3 components के आसपास revolve करते हैं. जो predictions होते हैं ये 3 component के आसपास revolve करते हैं, which is called as basically Beck calls it as and then the future. So for instance, if I have been criticized by let's say my friend today, and she says that यार तो अच्छी यार ढंग से कपड़े पहन के आया कर, है ना, something like that she says. So I will feel that, oh, I am ugly, I am not like I feel I am worthless, I am a failure, right? This is what I will think about myself. Then I will go on to say something like nobody loves me. So here basically my thoughts are more around the people around me or the world in general, and then I will say, oh, I have, like, when it comes to future, then this particular thought will go on to become like something like ki I am hopeless and things will never change, it will always be this way, right? So there is negative thoughts about oneself, then the world, and then the future, as you can see here. So now because of, so what are these things, which is the most important thing, ये मैंने आप लोगों को स्कूल like unit 1 में school of thoughts में भी बताया था कि basically these are cognitive errors or biases, ठीक है, which are somewhere you know affecting the way we are processing information about ourselves, and these are not like a true depiction of ourselves, they are an error, they are causing an error in the way we are seeing ourselves. That's why we call this as, you know, consider them to be errors and biases, ठीक है. Okay, now let's get to the treatment and intervention. If you have any kind of doubts, please do like let me know, or note them down, and then we can discuss it. Now in the treatment and the intervention, so basically in the intervention and treatment also there are various types. एक तो है आपका फार्माकोथेरेपी, ठीक है, एक है आपका ऑल्टरनेटिव बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो तो फार्माकोथेरेपी एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दोनों ही आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं या उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. बिहेविंग, उन सबको हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर्स, उन सबको मैनेज करने की कोशिश करते हैं. सो एज यू कैन सी हियर दैट फार्माकोथेरेपी विच इज़ बेसिकली ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन, इसमें क्या होता है कि आप ट्रीट करते हो इंडिविजुअल को विद द हेल्प ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, विद द हेल्प ऑफ मूड स्टेबलाइजर्स, विद द हेल्प ऑफ एंटी साइकोटिक्स. से कि साइकोसिस, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि क्या है, reality. Okay, so that here also in I think very worst case scenario, severe depression or depression with psychosis, उसमें हम लोग antipsychotics देते हैं, normally antidepressants and mood stabilizers होते हैं. And if you remember my lecture, मैंने बोला था एक psychosis होता है, एक neurosis होता है, और एक होता है मूड डिसऑर्डर्स, राइट. ये 3 मोर और लेस क्लासिफिकेशंस हम लोग कवर कर रहे हैं थ्रू आउट द होल सिलेबस. सो जो आपको हेल्प करता है मोस्टली इज़ योर एंटी डिप्रेसेंट्स. सो अगेन अनदर निमोनिक और अनदर वे टू रिमेंबर what all the antidepressants do और how do they manage, उसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है, SN like Sarojini Nagar. Just remember it like that if you want to remember it. So antidepressants mostly आपका टारगेट करते हैं नॉरएपिनेफ्राइन को. Like I had said before, ये सब naturally occurring होता है, and they kind of perceive, it helps in perceiving stress and preparing the body by either increasing the heart rate, sweating होता है, so that the body is aware and the body is ready and is kind of prepared to deal
with the stress. Okay, we will not get into detail of all that, but this is what how it kind of affects our body. Then serotonin हमें मूड रेगुलेट करता है, हमारा सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. ऑल दीज थिंग्स इट काइंड ऑफ हेल्प्स. Now basically in antidepressants there are three classes of antidepressants that are mostly used. एक तो होता है monoamine oxidase inhibitors जो कि डेवलप हुए अराउंड 1950s. And what it does is that it is responsible for the breakdown for the breakdown of serotonin and the as a result of which there is more availability of these two neurotransmitters. Now ये बहुत effective हैं, लेकिन ये पाया गया है कि this can be very very fatal if especially if this drug is being consumed along with other dietary consumptions जो कि normally हमारे diet में होते हैं, especially in Western country like red wine, beer, salami, so even cheese for that matter. I think I remember थोड़ा सा बुक में दिया गया है. सो ये सब चीज़ों के वजह से इसको MAOIs को नहीं यूज़ किया जाता है. फिर तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि ये थोड़ा फेटल था, इसलिए मोर रिसर्च वाज डन एंड देन ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स केम अबाउट. अब क्या है कि and if you remember just before we get into this, if you remember हमने earlier slides में देखा था मोनोअमीन में बेसिकली 3 काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आता है. NSD तो डे डोपामीन या नॉर्मली एंटीडिप्रेसेंट्स हैंडल नहीं करते हैं, वो नॉर्मली एंटीसाइकोटिक्स वगैरह में देखा जाता है, यूज़ होता है, राइट. सो यहाँ पे भी अगेन देयर इज़ एन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मोनोएमीन्स एंड इट रिड्यूसेस द सिम्टम्स. बट क्या है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स है. सो इट इज़ ऑफ कोर्स टॉक्सिक इन नेचर, थोड़ा बहुत है. लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए नॉर्मली ये ड्रग्स को काम करने के लिए 3 to 5 एंड इफ़ वो भी नहीं होता है तो फिर साइकेट्रिस्ट दे चेंज द ड्रग्स. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड नॉर्मली द ड्रग्स हैव टू बी कंज्यूम्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं. ड्राई माउथ ड्राई हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, यू हैव सेक्शुअल डिसफंक्शन एंड वेट गेन एंड थिंग्स लाइक दैट. Then the most recent one which is now being mostly used is SSRIs, which is selective serotonin reuptake inhibitors. See, it's all the way serotonin hai, so do not get worried of seeing all these things. Just remember serotonin. ठीक है, अब I'm telling you the story as well. So अब क्या है, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक टॉक्सिक है, राइट, तो इसलिए और रिसर्च किया गया और SSRIs people developed, like the scientists developed. So what it was seen was कि ये इतने effective नहीं है as compared to your tricyclic antidepressants. Tricyclic antidepressants are very very like effective in severe depression, but what happens is that कि SSRIs में side effect काफ़ी कम है और लोग इसको for long term consumption के लिए जो normally आपके मॉडरेट या सिवियर जो डिप्रेशन गो थ्रू करते हैं वो उनको दे कंज्यूम ऑल दीज ड्रग्स फॉर क्वाइट सम टाइम. ओके, सो उसलिए वो टॉलरेट ज़्यादा टाइम तक कर पाते हैं, बेटर टॉलरेट कर पाते हैं. अगर स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लोगे तो काफ़ी टाइम तक आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे. एज अ रिजल्ट इसके भी हालांकि साइड इफ़ेक्ट हैं, बट हैविंग सेड दैट इट इज़ फार मच मोर लेसर एज कम्पेयर टू योर ट्राईसाइक्लिक. एज यू कैन सी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ उतना नहीं होता. देयर इज़ ऑफ कोर्स सम प्रॉब्लम इन इन स्लीपिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, बट उसके लिए भी लाइक देयर आर नॉर्मली दोज आर सब्स्टिट्यूटेड विद अदर काइंड ऑफ ड्रग्स, ये जो साइड इफेक्ट्स. सो that's why SSRIs are found to be much like they are normally used, even though they are not very effective. Then the last one is mood stabilizers. Mood stabilizers are basically linked with your lithium, and इसमें ये है कि ये मूड स्टेबलाइजर्स आर नॉर्मली used for both depression and even bipolar, so you can use it for bipolar depression. अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप कर सकते हो. और अगर डिप्रेशन यूनिपोलर डिप्रेशन में अगर होता भी है तो इट्स मोस्टली यूज्ड फॉर मेनिया एपिसोड्स, बिकॉज इट maniac episodes as compared to the depressive episodes, right? Okay,
This would be very quick and simple. ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये बेसिकली जब जो हम लोग देखते हैं मूवीज़ में कि शॉक थेरेपी जो बोलते हैं, जो हम लोग साइकियाट्रिक पेशेंट्स या पीपल हु हैव मेंटल डिसऑर्डर्स दे आर गिवन शॉक, ये वो ECT इज़ दैट इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, 3 से 4 वीक्स लगते हैं. एंड समटाइम्स इफ द person is very suicidal, or they are resistant to certain medicines, or they cannot take medicines, or they need immediate help, something immediately needs to be done. क्योंकि साइकोथेरेपी वगैरह भी वो धीरे धीरे काम करती है एंड टेक्स लॉट ऑफ सेशंस. सो एकदम से इफेक्टिव नहीं होता है साइकोथेरेपी. सो एज अ रिजल्ट ऑफ, एंड इफ देयर इज़ अ पेशेंट हु इज़ वेरी सुइसाइडल, देन इन दैट केस नॉर्मली इन दीज सिनेरियोज ECT इज़ यूज्ड. इसमें यही होता है कि बेसिकली along with anesthesia and some kind of muscular relaxants, shock is kind of given, and because it creates some kind of electrical activity in your brain, and it induces shiza. That's why it is somewhat helpful, especially in maniac episodes. And in maniac episodes it's been found कि situation काफ़ी बार improve भी हो जाती है और almost symptoms चले जाते हैं. That's what remission is, कि symptoms एकदम चले ही गए हों. ठीक है. फिर ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है कि some part of the brain, like in shock therapy it's like throughout the body हो जाता है, but in or brain, in transcranial there is local stimulation of some portions of brain. We will not go into detail. And वो जो एक्सपोजर होता है इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच थोड़ा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंड्यूस किया जाता है ना. थोड़ा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डाला जाता है इन द ब्रेन ऑन एक्सपोजिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच ये थोड़ा, obviously this is non-invasive because it doesn't harm the individual, and it's found to be effective in people who have symptoms of depression. So the another advantage of TMS, other than the fact कि painless है, is also कि TMS after it's been also seen कि TMS cognitive performance, जो memory performance होती है, learning performance होती है, उसको negatively affect नहीं करता है. Sometimes it's even seen that कि वो better कर देता है as compared to ECT. ECT में definitely जो memory, जो cognitive performance होती है, वो बहुत reduce हो जाती है और it kind of leads to reduction. There's a typo here, I'll fix this. And bright light therapy, ये आप link कर सकते हो to the factor of biological factor of sunlight, and how it can be, light therapy can help in seasonal affective disorder, in treating seasonal affective disorder. राइट. और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्रांसक्रेनियल स्टिमुलेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट हार्मफुल. सो नॉर्मली जो MRI हम जो करते हैं, जो fMRI स्कैन्स वगैरह जो करते हैं, वो मोस्टली आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंडर ही होता है. दैट्स हाउ द स्कैनिंग एंड इमेजिंग इज़ डन. बट जो भी वो जो which frequency there it's been set, wo is at a harmless frequency. Right now let's do the last section. So basically here we are going to discuss about the psychological interventions. So for here there is CBT. So obviously as the name suggests, it's been developed by Aaron Beck, and उसमें क्या करते हैं, Aaron Beck kind of tries to evaluate in this particular therapy. So you kind of try to evaluate कि क्या डिसफंक्शनल बिलीव्स है, क्या नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है, उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं. राइट. सो इवन दो एरन बेक न्यू कि हाँ ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही कुछ बिलीव्स आते हैं, बट द CBT एज अ ट्रीटमेंट इट फोकसेस ऑन द प्रेजेंट, हियर एंड नाउ प्रॉब्लम पे फोकस करता है, एंड इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द फॉल्टी पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग एंड ट्राइज टू challenge them and change them. Right. So
the behavioral activation treatment, this is again coming from behavioral school of thought. So behavioral इसमें क्या है कि it focuses on trying to make the patient more active and engage the patient more in their environment, and it does not involve in changing their cognition. So what it will do is that it will kind of include techniques like कि हम डेली एक्टिविटीज़ कैसे स्केड्यूल करें, है ना। फिर जैसे कोई चीज़ें अगर हमने करी, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं चाहती हूँ कि मैं म्यूज़िक को पहले जैसे इन्जॉय करूँ, तो आई विल स्केड्यूल इट इन माई डे। जो मैं पहले ऐसे ही करती थी बिना सोचे समझे मज़े में, वो मैं अब स्केड्यूल करके कि अच्छा हर रोज़ आफ्टर पढ़ाई के बाद मैं आधे घंटे गाने सुनूँगी, एंड देन आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ. So things like rewarding will also be included in behavioral activation therapy, because it helps in maintenance of behavior. Then also rating and things like that. ठीक है. Then mindfulness based cognitive therapy में क्या होता है कि you are instead of wanting to change the way we think, uh, which is what your CBT is doing here, the mindfulness is a technique tries to focus on the way we relate to our emotions or relate to our feelings or relate to our bodily sensations. So for instance, I'll give you an example because ये मेरे साथ हो चुका है. So for instance, bodily जैसे कि a lot of times people who have like panic or episodes, or basically any kind of anxiety episodes, what would happen is that either they will start feeling their heartbeat very fast and loud, and they would either start sweating, and because ये sensations आ रहे हैं, so they'll start thinking कि वो अब तो panic attack आ रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, panic attack आ रहा है, मेरे को heart attack आ जाएगा, है ना, I'll not be able to survive. All these thoughts will start coming. So mindfulness as a technique will try to focus on not to change the way we relate to our thoughts. So it will, instead of seeing it as a threat, it will observe the bodily sensation. ठीक है, it will observe it and it will accept it, and it will it will involve some kind of deep breathing. राइट. सिमिलरली ऐसे ही कोई अगर थॉट आ गया मेरे दिमाग में जो कि अ नेगेटिव थॉट है, सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रूमिनेटिंग ऑन इट, आई विल जस्ट लेट द थॉट कम एंड गो. सो दिस इज वॉट मेडिटेशन इज ऑल्सो लाइक वेरी फोकस्ड ऑन, right? And basically it helps the individual in developing a sense of awareness about one's thoughts and feelings, and it does not try to distract. It does not focus on distracting or engaging or avoiding those thoughts and feelings by trying to do something else, but it rather focuses on accepting the feelings as they are coming. Okay, now the exclusion part. So जो हम लोगों ने इनिशियली बोला था कि कौन सा टाइप ऑफ डिप्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मोस्ट डिसऑर्डर. सो देयर आर टू टाइप्स. जब ग्रीफ होता है या जब पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, आई जस्ट ब्रीफली टेल यू. ग्रीफ इज़ बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस व्हेन ट्रेडिशनली स्पीकिंग उसको बोलते हैं कि जब व्हेन इन एन इवेंट ऑफ when a close one dies, but it's not always like that. So it can happen if you have lost your job, if you've had a breakup, or if you've lost a very close friend, or you know or you are having divorce, or you're having separation from, let's say, your child. So grieving can involve all those as well. And Ballboy ने 4 responses दिए हैं to loss of a loved one, and basically it's been kind of given here. I will not go in detail. I think it's very like clear cut, but I'm just trying to say कि ये grief जब for instance when I have lost my sibling, or let's say my parents or a friend, then I will not consider that. And after that जो मेरे को insomnia होता है, या mood में जो I feel very low, or I have panic attacks, or I have anger, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं डिप्रेशन. देयर इज़ अ कंडीशन टू दैट ऑल्सो. आई विल कम टू दैट.
Similarly, एक और एक्सेप्शन होता है postpartum depression, which is basically normally experienced by new mothers, and it's after pregnancy. So it normally, this kind of depression normally kind of subsides with time, but if you don't have like good social support around you, and then it can really go on for long. And I had some of my, like one of my friends who kind of did go through this. So basically in this, your mood would suddenly change, right? And there would be an exaggerated and rapid change in mood. So this can be confused as bipolar, and there can be irritability, there can be they would be crying very easily. So all these are symptoms, and normally ये इसलिए होता है especially with mothers, because new mothers, because after delivery there is a huge hormonal readjustment and changes that are happening. So as we have seen in the biological causes, ki hormones play a very very important role, right? So that becomes one of the causes. Then psychological is also because there is a lack of social support, so suddenly everybody will be like just focusing on the child, and it like the person will might feel difficulty in adjusting to the physical physical struggles or the physical challenges of pregnancy and labor. And then adjusting also to the new identity, and bearing the responsibility of the child, taking care of the child, feeding the child, and the sleep of children is also not very like normal and very settled, right? So they would sleep, they would there is no time for sleeping, eating, and things like that, right? And of course another cause is also there is a family history. ठीक है, तो ये है आपका। अब मैं ये बोलने वाली थी कि इन दोनों में एक कंडीशन है कि अगर मान लो ये बहुत टाइम तक चलता है, मान लो प्रेगनेंसी हो गई है, अब उसके 1 साल 2 साल बाद अगर फिर भी the person is feeling like this consistently, then it's a different thing, okay? But immediately, let's say if I have lost a friend, okay, and I'm having some depressive symptoms, then in that case for some period it is considered to be not a mood disorder, because obviously it's a huge change in my life, and it has psychologically affected me. So that's why it would not be considered. But after a certain gap, like I think it's after 6 months or so, you kind of then pay attention to it, and you then do have to go and seek medical advice. And even when it's not so, I mean, it's always good to have some kind of psychological help and advice. So prognosis and prevalence, I'm not going to do it this in detail, but I will just run you through some of the points. So in this particular prognosis, like I said, it's basically how the disorder develops with time. So it's been seen that normally हम ये बोलते हैं कि early childhood या childhood years में before adolescence 15-16 लोगों को depression नहीं होता, बस ऐसा नहीं है. It's been now more and more seen that more and more people are kind of reporting depressive symptoms or some sort of condition which is related, which signifies depression. But adolescent as a phase has been considered to be as an important time where probably depression can start setting in, and काफ़ी बार ऐसा होता है कि इसके effects can go into the young adulthood time as well. So that's what mostly आपके prognosis में बोला गया है. And obviously they have said कि adolescent time में there have been some kind of gender differences as well that's been seen. So it's said that depression as a disorder is more prevalent amongst women than men. Then prevalence may some of the points that your book has given is basically talks about prevalences की कितना हम पाते हैं इस particular disorder को. So it is, if we compare it with other kind of psychological disorders, then it is probably 15 to 20 times more as compared to schizophrenia or let's say anxiety disorder. So that is what happens in prevalence. And like I told you, gender differences में women are more likely to have depression,
And also, if you would have seen the news over the past couple of 2 years, it has been found that WHO did a survey, a mental health survey, where it found that South Asian countries are reporting more number of cases in depression, and India tops worldwide. So basically, throughout the whole world, if we kind of compare, India is on the top. So it's kind of a capital of depression. So you don't have to mention this last particular point. अगर टाइम मिल जाएगा तो आप दोनों ये दोनों पॉइंट्स प्रोग्नोसिस और प्रेवलेंस कवर कर पाओगे. And about that WHO finding, you can very easily Google it and you can find it. So here are some of the pages that I want you to refer, because cognitive theory is very important. So do read it and do understand it. Impact of depression on others.